I welcome you all on this webinar on how you can trade Nifty and Bank Nifty in intraday. See what I have done, I have divided this webinar into two parts. Okay, in first half, what we will do, guys, we will discuss how we can trade Nifty, Bank Nifty, and stocks. Okay, in intraday, I will also discuss how one can become a profitable trader. In second half, what we will do, we will we will try to discuss gap down opening. If stock price open gap down, then as a trader, how we can plan short trade on the day of gap down opening. So that I will cover in second half of webinar. Now, before starting with this session, I want introduction from you guys. In chat box, please type your full name and your profession. Okay, just these two things you need to do. Type your full name and your profession. Okay. Okay, great. Thank you, guys. Thank you for your replies. Okay, great. Thank you. Thank you very much. So this introduction will help me a lot. Okay, in going forward when we will move in the webinar. So this will help me a lot. Great. So let's move ahead now. Let me give you my brief introduction. See, my name is Manish Sachdev. Okay, by profession, I am a trainer. I take training sessions on CFA Level 1 program and on technical analysis. See, in my training career, I got opportunity to work with BSc Institute Limited and with ITM group of institution as a trainer. So guys, till date, I have total 12 years of experience in training field. I am also a founder of Sri Sai AMC. Now at Sri Sai AMC, we trade on behalf of our clients. We take positions only in option strategies. Our goal is to generate 2 to 3% return on clients capital. देखिए आज के डेट में अगर आप अपने फंड्स को फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग पीपीएफ स्कीम, so you can get on an average 6 to 8% return per year. My goal is I want my clients to generate higher returns compared to what bank FD, RD, and PPF schemes are offering. So with this vision, we have started this Sri Sai AMC. The vision statement of Sri Sai AMC is to make every client money double in 4 years of time. So I've started this service in the month of March 2021, and till date, I have managed to deliver 15% return, 1.5 on clients' capital. Now let's talk about today's webinar. So as I told you in the beginning, ये webinar को मैंने दो parts में divide किया है. First part में हम लोग discuss करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं. So the setup which we are going to discuss is master candle setup. Now with the help of master candle setup, you guys can trade Nifty, Bank Nifty, and even stocks. So without wasting any time, let's directly start with master candle setup. Let me give you the very quick introduction now. What exactly master candle is? तो यहाँ पर आप definition दे सकते हो आप screen पे. This is the definition of master candle. A candle is known as master or mother candle when its high and low covers at least next 3 to 4 candles high and low. Now to explain this definition, I have a
image with me. Now look at this big bullish candle. ठीक है, ये candle पे आप focus कीजिए. Now what I have done, I have taken one horizontal line at the high of this candle. एक horizontal line आपको low पे दिख सकती है. This is the one horizontal line at the candle low. Now look at the next 4 candles. Can you see next 4 candles are inside this big bullish candle? Now when you see these 4 candles very carefully, you will come to know these candles are very small in size. So therefore we can say these all are baby candles. And this candle is known as mother candle or master candle because this candle is covering next 4 baby candles. So remember guys, in order to call this candle as a mother candle or master candle, minimum, I will say minimum next 3 baby candles must fall inside this candle. Okay, then only we can say, yes, this is master candle or mother candle. Now, when we are trading live, ठीक है, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, तो वो टाइम पे हाउ यू विल कम टू नो दिस कैंडल एज अ मास्टर कैंडल. ठीक है, कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे. Now, when we are trading in live market, okay, we want very first candle on 15 minutes time frame as a master candle. This is the strict rule you have to follow. दिन की पहली कैंडल मास्टर कैंडल होनी चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. So on 15 minutes time frame 15, the very first candle of the day has to be master candle. This is the strict rule you have to follow. Now how you will come to know the very first candle is master candle? ये आपको कैसे पता चलेगा? See, for that what you need to do, आपको next 3 candles को देखना है. You need to look at next 3 candles. If next 3 candles are coming inside first candle of the day, this means we are having master candle setup. अगर next 3 Okay, sorry guys, I got disconnected due to bad connectivity. I hope you can hear me, you can see my screen now. Please confirm. Okay, great. So let's continue. तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इन लाइव मार्केट कि दिन की पहली कैंडल मास्टर कैंडल है. ये आपको कैसे पता चलेगा? सो फॉर दैट यू नीड टू लुक एट नेक्स्ट 3 कैंडल्स. आई वाज सेइंग अगर नेक्स्ट 3 कैंडल्स फर्स्ट कैंडल के अंदर आ रही है, this means the very first candle is master candle. So this is how you need to recognize in live market. Perfect. So you will come to know at 10:15 whether we have a first candle as a master candle or not. Now let's see how we can take a trade. Let's discuss इस setup को हम लोग trade कैसे कर सकते हैं. So अभी तक देखिए क्या हो रहा है. Price is moving inside master candle. प्राइस मास्टर कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्राइस मास्टर कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है. प्राइस इज जस्ट मूविंग इनसाइड मास्टर कैंडल. सो दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. ठीक है, इसको हम लोग कंसोलिडेशन कहेंगे. वी विल इनिशिएट अ ट्रेड वंस प्राइस ब्रेक मास्टर कैंडल हाई और लो. इफ प्राइस ब्रेक मास्टर कैंडल हाई तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो. आपका स्टॉप लॉस रहेगा मास्टर कैंडल लो. If price break low of master candle, you can go for short trade. ठीक है, आप short trade ले सकते हो. आपका stop loss होगा master candle high. Now let's talk about target. What will be the target? आपका target क्या होगा as per this setup? See, target के लिए आपको क्या करना है? You need to calculate master candle range. आपको master candle range calculate करनी पड़ेगी. Now how to calculate range of any candle? देखिए किसी भी कैंडल की रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. कैंडल हाई माइनस कैंडल लो, मास्टर कैंडल हाई माइनस मास्टर कैंडल लो. When you do this calculation, you will get range of master candle. Now let's assume 100 is the high, 90 is the low. So 100 minus 90,
When you do this calculation 100 minus 90 तो आपको range मिलेगी 10 points. Now when price break 100, अगर price 100 rupees break कर रहा है तो आपका target होगा 110. Master candle high plus master candle range will be your target. Master candle high 100, range we got 10 points. 100 plus 10 points. Okay, 110 will be your target. In the same way, अगर price 90 break कर रहा है on downside, your target will be 80. Okay, so master candle low minus master candle range will be your target. Master candle low 90, range we got 10 points. So 90 minus 10, okay, 80 will be your target on downside. So guys, this is how you need to trade this master candle setup. Any doubts till now, you can ask in chat box, I will answer. If concept is clear to all of you, I will request, please type clear in chat box so that we can move ahead. Okay, Manoj sir, we will use 15 minutes time frame, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये सेटअप ढूंढना है. हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स वी विल डिस्कस लेटर. पहले आप सेटअप समझिए, अभी तक सेटअप इंट्रोड्यूस किया है. सो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग पार्ट सर. How to select stocks, okay, we will discuss later on. Ranjit sir, first try to understand the setup. आपको पहले थ्योरी पता होनी चाहिए सेटअप की, लॉजिक पता होना चाहिए. डायरेक्टली चार्ट्स पे नहीं जा सकते हम लोग. यू नीड टू बी पेशेंट. थोड़ा पेशेंस दिखाइए इन स्टॉक मार्केट. पेशेंस काफी काम आएगा आपको. दिस इज इंट्राडे सेटअप, राहुल सर. Okay, so guys, this was all about theory. So those who joined late, what I will do in coming slides, I will repeat this entire setup for you. So this was all about theory. Now let me show you some real life examples. So this will give you more clear idea about this setup. Still, I have to explain some important points, okay, related to this setup. So focus on the graph, which I am showing to you. At the end of session, what I will do, I will pick some recent examples and we will discuss together. तो अभी आप dates वगैरह मत देखिए. This is the timeless setup. तो ये setup past में भी अच्छे से काम कर रहा था. Nowadays, it is also working very good. In coming days, also it will work because this is pure price action which we are learning. So this is the timeless setup. Focus on learning part. At the end of session, I will pick some recent examples and we will discuss together. Now, those who have joined late, okay, you guys can pay attention. I will repeat this entire setup for you. Entry, stop loss, target, हर एक चीज हम लोग discuss करेंगे. So this is the very first graph in front of you. Okay, you can see this is Bank Nifty. ठीक है, time frame आप यहाँ पर देख सकते हो. This is 15 minutes time frame. This is the very first candle of the day. ये दिन की पहली candle है on 15 minutes time frame. So focus on first candle. सिर्फ आप first candle को देखिए. Just look at the first candle of the day. Now look at the next 3 candles. आप देख सकते हो जैसे कि next 3 candles first candle के अंदर आ रही है. Next 3 candles are inside first candle of the day. So now we can say this very first candle is master candle. एक बार आपको पता चल गया दिन की पहली candle master candle है. Next step, you need to calculate range of master candle. Now, how to calculate range? Very simple, candle high minus candle low. Now, when you do this calculation, high minus low, you will get range 248 points. This means after market opening, जैसे ही market open हुआ, in first 15 minutes, पहले 15 मिनट में, Bank Nifty shoot up 248 points. Okay, Bank Nifty went up 248 points. Now, this 248 points is a very big move. Okay, given that we got this move in first 15 minutes only, so this was very big move. And see what happened after that. Price turned completely sideways. You can see price was just moving inside first candle. So these all are baby candles. In candles को आप ध्यान से देखिए.
These all are baby candles moving inside master candle. Now, why price turn sideways? After a big move, why price turn sideways? देखिए मार्केट खुलते ही आपको एक बड़ा मूव मिल रहा है 248 पॉइंट्स का. Because of this big move, price turn completely sideways. Now, before price give any further move, you can say it is taking some rest. And finally, in this candle, you can see we got breakout. So these all are were baby candles inside master candle. So ये long consolidation period था. And finally, in this candle, you can see we got breakout. Now we want breakout on closing basis. So wait for candle to get close. Do not take entry in running candle. We want breakout on closing basis. So जैसे ही ये breakout candle close हो रहा है, आपको long trade में enter होना है. You need to take long trade once this breakout candle gets closed. Now, what will be the target? आपका target क्या होगा when you are going for a long trade? See, your target will be master candle high plus master candle range. Master candle high और master candle range ये दोनों को आप add कीजिए. So 21,221 plus 248 points. Okay, 21,469 will be your target, which was achieved in this candle. So this was 2 candles trade after breakout. ठीक है, breakout के बाद target 2 candles में ही आ गया इसमें. Now let me count the number of baby candles for you. ठीक है, baby candles हम लोग count कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. See, we have a 15 baby candles inside master candle. Now every candle is having a duration of 15 minutes, 1-5. So when you do this calculation 15 into 15, okay, this was 225 minutes long consolidation, and finally आपको breakout मिल रहा है 16th candle में. So guys, I can say this was healthy consolidation. By healthy consolidation, I mean from morning till 1:30 or 2 p.m. price was just moving inside master candle. Now, whenever you see this type of consolidation, this is known as healthy consolidation. And I have seen that breakdowns works really well after healthy consolidation. एक healthy consolidation के बाद breakouts, breakdowns, ठीक है, काफी अच्छे से work करते हैं. Now look at the another important point. यहाँ पर आप focus कीजिए. This is the gap area. Can you see the gap on graph? On this day, see what happened. Bank Nifty opened gap up. Bank Nifty opened above previous day high. So this was gap up opening day. Now, whenever you see master candle setup on the day of gap up or gap down opening, you can take a trade. Very high chances trade can work in your favor. मास्टर कैंडल सेटअप काफी अच्छे से काम करता है अगर गैप अप या फिर गैप डाउन के बाद सेटअप बनता है तो. सो एज अ ट्रेडर यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी मास्टर कैंडल कमिंग इन योर वे. ओके, आपको हर एक मास्टर कैंडल ट्रेड नहीं करना है. यू नीड टू फिल्टर आउट which master candle you will trade, which master candle you will avoid. So 2 points will help you. Point number 1, you can look for healthy consolidation. Point number 2, you can look for gap up or gap down opening. Now even if you are meeting any one point, ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी एक point भी meet हो रही है, you can take a trade. Very high chances trade can work in your favor. Now let's discuss stop loss. What will be the stop loss when we are going for a long trade? See, while explaining theory, मैंने आपको समझाया था अगर आप long trade में जा रहे हो, when you are going for a long trade, your stop loss will be master candle low. अगर हम long trade ले रहे हैं तो stop loss रखना है master candle low. This is what we have learned in theory. But we can refine this stop loss, okay, to improve risk reward ratio. So we will not keep master candle low stop loss. We can refine it to improve risk reward ratio. Now this is the same graph Bank Nifty which we have just discussed. ये slide में मैं आपको explain करूंगा how you can decide stop loss. See, for stop loss you need to read price action very properly. ठीक है, आपको price action read करना आना चाहिए अगर आपको stop loss अच्छे से decide करना है तो. See, this was master candle. उसके बाद you can see what happened. Price came down.
Look at the low of this candle, 20,975. Okay, from here you can see price went up, again it came down. Look at the low of this candle, 21,077. now this low will be termed as higher low. ठीक है, इसको हम लोग higher low कहेंगे. You can see this value is more than previous low, so therefore you can call this as a higher low. From here you can see one more time price went up, again it came down. Now look at the low of this candle, 21,127. now from here you can see price went completely sideways. Look at the low of this candle, 21,124. now these two values you can see they are almost same, and finally you are getting breakout. ठीक है, ये कैंडल में आपको ब्रेकआउट मिला. ब्रेकआउट कैंडल क्लोज्ड एट 21,281. so take long entry here and keep stop loss 21,124. so guys, point to note down here is when we are going for a long trade, our stop loss will be higher low. See, this was initial low, this became higher low, now this is the new higher low. तो ये आपकी एंट्री है 21,281. this is stop loss 21,124, and this is the target 21,469. so guys, please remember for all long trades what you will do, you will keep higher low as your stop loss. अगर आप long trade में जा रहे हो तो higher low आपका stop loss होना चाहिए. now let me show you one more example. ये निफ्टी का ग्राफ है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड दिस इज द फर्स्ट कैंडल. फोकस ऑन फर्स्ट कैंडल, इसको आप ध्यान से देखिए. नाउ लुक एट द नेक्स्ट 3 कैंडल्स. ठीक है, नेक्स्ट 3 कैंडल्स को आप देखिए. अगेन यू कैन सी नेक्स्ट 3 कैंडल्स आर इनसाइड फर्स्ट कैंडल. सो दिस फर्स्ट कैंडल विल बी टर्म्ड एज मास्टर कैंडल. ठीक है, इसको हम लोग मास्टर कैंडल कहेंगे. रेंज आप यहां पर चेक कर सकते हो, 72 पॉइंट्स इज द रेंज. These all are BB candles. Okay, this was consolidation phase. Price जो है वो master candle के अंदर ही move हो रहा था. So this was consolidation. And look at this big breakdown. In this candle, we got breakdown. Now look at this candle. This candle is very strong bearish candle. By looking at this candle, we can say bears are active. This is very strong bearish candle. So guys, as a trader, at the time of breakout or breakdown, okay, make sure candle is very strong. It should look like convincing breakout or breakdown. This one point will give you more confidence to initiate a trade. Breakout या breakdown के time पे एक strong candle बननी चाहिए. This will give you more confidence, okay, to initiate a trade. See, before this candle, price was trying to break master candle low, but completely failed. And you got nice rejection candle. But finally in this candle, you can see price succeed. This candle break and closed below master candle low. So short trade is triggered here. यहाँ पर एक short trade trigger हुआ है. Now what will be the target? आपका target क्या होगा? Master candle low minus master candle range. So 9089 minus 72 points. Okay, 9017 will be your target, which was achieved in this candle. So this was 4 candles trade after breakdown. Now let me show you, अगर हम लोग short trade में जा रहे हैं तो what will be the stop loss? When we are going for the short trade, what will be the stop loss? So this was master candle in Nifty. Initially you can see Nifty went up, made a high 9156. From here you can see price came down up to this candle, again went up, made a new high 9113. Now this is lower high. When you compare this value with previous value, see, this is the lower high, and finally you are getting big breakdown. Breakdown candle close हुआ 9067. So take short entry here and keep stop loss 9113. So guys, point to note down here is when we are going for a short trade, our stop loss will be lower high. For long trade, it was higher low. For short trade, it will be lower high. तो ये है एंट्री 9067, स्टॉप लॉस 9113, टारगेट 9017. So please remember, for all short trades, what you can do, you can follow lower high as your stop loss. Now this is very interesting slide to show you. Nifty again on 15 minutes time frame. ठीक है, ये दिन की फर्स्ट कैंडल है.
This is the first candle. This is the intraday trade, Mr. Mohan. This is the first candle of the day. And see what happened after that. Throughout the day, price was completely sideways. So no trading opportunity on this day, because till last candle, you can see price is just moving inside first candle. So some trading sessions can be like this. Okay, entire day will be consolidation. You will not get any trading opportunity. Okay, one more example we will see. See Nifty 15 minutes time frame. ये दिन की first candle है. First candle of the day, big bearish candle. This time you can see. You can also see this fact. Okay, this is very important. On this day, you can see we got gap down opening. You can see the gap on graph. ठीक है, आप gap देख सकते हो यहाँ पर. So ये दिन पे क्या हुआ? Nifty खुलाई gap down. Nifty open below previous day low. Range आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. 77 points is the range. So after market opening, you can see straight away Nifty came down 77 points. Now again, this 77 points is a very big move. ठीक है, ये 77 points एक बड़ा नंबर है. Given that we got this move in first candle only. दिन के पहले 15 मिनट में खुलते ही Nifty is moving down 77 points. And therefore you can see what happened. Price turn completely sideways. उसके बाद आप देखिए प्राइस पूरा sideways हो गया. Look at all these candles. Very small, tiny, baby candles you can see. ये candles को देखते ही आप कह सकते हो कि yes, consolidation is going on. And this is healthy consolidation. See, up to 2 p.m., price is just moving inside master candle. Now, why price turn completely sideways? देखिए पहले ही कैंडल में आपको एक बड़ा मूव आ गया. So before price give any further move, it is taking some rest. एक बड़े फॉल के बाद consolidation is must. And after 2 p.m, you can see what happened. You are getting one side move. So this is very common pattern. In live market, you can always check this. So you will get a big move in first candle, and then price will turn completely sideways. And then suddenly after 2 p.m, you will get one side move. You will get trending move. This trending move can be on downside. This trending move can be on upside. So I always like to see consolidation like this, because I have seen एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं. रविंद्र सर, इन द बिगनिंग ओनली आई टोल्ड यू focus on the learning part. At the end of session, I will pick very recent examples. अक्टूबर महीने के एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले आप सेटअप समझिए सर. आपका सेटअप क्लियर नहीं होगा तो अभी रिसेंट चार्ट्स बता के क्या मतलब है आपको. So try to learn the setup. Okay, अक्टूबर महीने के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको. Now guys, apart from index, you can also trade this setup in stocks. ठीक है, ये जो सेटअप है स्टॉक्स में भी अच्छे से काम करता है. So this is price graph of Indico, 15 minutes time frame 1.5. This is the very first candle of the day. ये दिन की पहली कैंडल है, मास्टर कैंडल. And see what happened. Healthy consolidation. These all are baby candles. Breakout after 2 p.m. Target in 2 candles. So even for stocks, okay, healthy consolidation is must. एक healthy consolidation के बाद breakouts काफी अच्छे से काम करते हैं. Same setup now you can see in PVR. This is master candle. Healthy consolidation. You are getting breakout after 2 p.m. Now look at the breakout candle. ये breakout candle को आप ध्यान से देखिए. This is very strong bullish candle. This is convincing breakout. तो जैसे मैंने कहा आपको breakout के टाइम पे अगर आपको एक strong candle मिल रही है, so very high chances trade आपके फेवर में काम कर सकता है. So this is convincing breakout. ये breakout candle को देखते ही you can say yes, bulls are active. By looking at this breakout candle, I can say yes, bulls are active now. And in 3 candles, we got the target. Accuracy of this setup is more than 60%. Now let's discuss some recent examples. Okay, this is the month of May 2021. This is Nifty on 15 minutes time frame 1.5. Date you can check at the bottom. 19/20/21. ठीक है, आप नीचे dates देखिए. 19/20/21. On which date, guys, can you see this setup? Okay, type in chat box. Let me see if you can spot this setup on graph.
आपको कौन से डेट पे ये सेटअप दिख रहा है? ओके, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स 19, 20, 21 में से ऑन विच डेट कैन यू सी दिस सेटअप ऑन ग्राफ? ओके, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट डू टाइप इन चैट बॉक्स, लेट मी सी अगर आप ये सेटअप अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं. Look at the graph very carefully. 19, 20, 21 इन तीनों में से कौन से डेट पे आपको दिख रहा है सेटअप? Okay, 20th is perfect. So we got many replies for 20th. Yes, 20th is correct answer. So जो भी हमने important points देखिए डिस्कस की थी in previous slides, so you will find here. So let's focus on 20th. Can you see what happened on 20th? This is the very first candle. A big fall. Can you see? This is a very big bearish candle. So after market opening, Nifty came down 90 points, 90. Nifty straight away went down 90 points. Now 90 points is a big fall. And see what happened. Price turned completely sideways. एक बड़े fall के बाद price आप देखिए sideways turn हो गया. These all are baby candles. Yes, so wick is outside. I can see that's completely fine. See, as long as candle is closing inside first candle, तो इसको हम लोग बेबी कैंडल ही मानेंगे. ठीक है, एक दो कैंडल्स की अगर विक बाहर आ रही है मास्टर कैंडल से, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन. कैंडल का क्लोजिंग इनसाइड मास्टर कैंडल है तो इसको हम लोग बेबी कैंडल ही मानेंगे. एंड सी दिस वाज हेल्दी कंसोलिडेशन up to 2 p.m. price is just moving inside master candle. When we will enter, see we will enter when price will break master candle low. सर ये जब लो ब्रेक होगा राहुल सर, उसके बाद आपको एंटर होना है. सो यू कैन सी इन विच कैंडल प्राइस ब्रेक मास्टर कैंडल लो. सी दिस इज द एंट्री कैंडल. ठीक है, ये कैंडल में आप एंटर हो सकते हो. एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी व्हाट हैपन. अनदर 100 पॉइंट्स फॉल. ये 100 पॉइंट्स का फॉल है आफ्टर 2 p.m. So this is very common pattern. Okay, a big fall, then price will turn sideways. After 2 p.m. you will get trending move. See, this is Bank Nifty in the month of July 2021. Okay, 13th and 14th. 13th and 14th. On which date, guys, can you see this setup? राहुल सर, वी वांट ब्रेकआउट ऑन क्लोजिंग बेसिस. ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया. कैंडल का विक आउटसाइड है. ऑन क्लोजिंग बेसिस दिस कैंडल इज इनसाइड मास्टर कैंडल. करेक्ट. सो इन बैंक निफ्टी वी हैव अ सेटअप ऑन बोथ डेज 13th एंड 14th. दोनों दिन पे आप देख सकते हो वी हैव अ सेटअप इन बैंक निफ्टी. ओके, सो दिस वाज मास्टर कैंडल. नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंड ऑन 13th. देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ है ऑन 13th. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इफ यू आर गेटिंग मास्टर कैंडल ऑन द डे ऑफ गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, वेरी हाई चांसेस सेटअप काफी अच्छे से काम कर सकता है. तो ये गैप अप खुलने के बाद यू कैन सी वी आर गेटिंग मास्टर कैंडल सेटअप. यू कैन सी द गैप ऑन ग्राफ एंड दीस ऑल आर बेबी कैंडल्स. ठीक है, ये सब बेबी कैंडल्स हैं. सो समवेयर हियर वी विल एंटर. ठीक है, जैसे ही मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है इन दिस कैंडल और इन दिस कैंडल यू कैन एंटर. एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी वी गॉट अ नाइस अप मूव. सेम थिंग हैपेंड नेक्स्ट डे. एक बड़ा फॉल यू कैन सी इन फर्स्ट कैंडल, बिग बियरिश कैंडल. Price turned completely sideways. Look at the next 4 baby candles. So for next 1 hour, price was moving sideways. And look at this breakout. Can you see this is very strong breakout? Now, even though we do not have healthy consolidation, देखिए अगर आपको healthy consolidation नहीं मिल रहा, but आपको breakout, breakdown एक अच्छे strong candle से मिल रहा, you can enter in the trade. Okay, very high chances trade can work in your favor. And after this breakout, you can see we got nice up move on graph. Kalpana ma'am, whatever doubt you have, okay, I will request you can type in chat box, I will answer.
So after master candle, see, we don't know, on which side we will get breakout. So wait for breakout. If you are getting breakout on upside, go for a long trade. If you are getting breakout on downside, you can go for a short trade. So till the time price is just moving inside master candle, तब तक आपको कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन खत्म हो, उसका आपको वेट करना है, ठीक है। एक बड़े फॉल के बाद प्राइस कंसोलिडेट होना स्टार्ट करेगा, वेट फॉर कंसोलिडेशन टू गेट ओवर। ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री लेना है। कांट यू सी दिस बिग ब्रेकआउट? सर जी, ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है अपने को। दिस कैंडल ब्रेक एंड क्लोज बिलो मास्टर कैंडल हाई, दिस इज द एंट्री कैंडल। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपको एंटर लेना है। See, master candle range is important, okay, not entire body. So how to calculate range? High minus low. Master candle high minus master candle low. Range is important. Anil sir, this is for intraday trading setup. ये intraday setup है. How to take entry on breakout candle. जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो रहा है, सर जी आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है। यू नीड टू एंटर ऑन लॉन्ग साइड। You can see some more examples, guys. This is Berger Paints. ठीक है, this was master candle consolidation. In this candle, we are getting breakdown. Now you can enter on short side. And after this breakout candle, see, one more time price went up, made a lower top. And from here, you can see we got one side move. So this was a short trade in Berger Paints. See, this is IGL, master candle, consolidation, breakdown. And from here, you can see we got one side trade. Now, again, this is very strong candle, you can see. ठीक है, strong bearish candle है. तो ये candle जैसे ही बंद हो रही है, you can enter on the short side. Okay, now let's come to very recent example. देखिए, ये सितंबर महीने का एग्जांपल है, very recent 2021. आप डेट चेक कीजिए, 27th, 28th, 29th. On which date can you see master candle setup? 27, 28, 29. कौन से डेट को आपको सेटअप दिख रहा है? ओके, 27th वी डू नॉट हैव सेटअप। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के अंदर 3 कैंडल्स नहीं आ रही है। वी डू नॉट हैव 3 बेबी कैंडल्स, सो 27th इज नॉट द सेटअप। No, open don't have to be equal high, not important. 28th is perfect. So this is big master candle. You can see these 3 baby candles inside first candle. So this was consolidation phase. देखिए, मास्टर कैंडल का लो ये कैंडल ने ब्रेक किया। इन दिस कैंडल वी विल एंटर ऑन द शॉर्ट साइड, वन साइड मूव यू कैन सी। इवन इफ यू लुक 29, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ऑन 29th, दिस इज वेरी स्मॉल मास्टर कैंडल। Okay, you can see all these wicks are crossing master candle high. तो 29th को भी आप ध्यान से देखिए, ये मास्टर कैंडल है and this is the breakout candle. See how strong this breakout is. एक strong candle आपको मिल रही है breakout के टाइम पे, and one side rally you can see on upside. Okay, so I hope it is clear. In this candle we will enter on 29th, and in this candle we will take short trade. Okay, in this candle we will take short trade on 28th. ये कैंडल में शॉर्ट ट्रेड आपको लेना है। देखिए, मास्टर कैंडल के लो के नीचे कैंडल बंद हुई है, एंड ये कैंडल पे आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, बिकॉज दिस कैंडल ब्रेक एंड क्लोज्ड अबव मास्टर कैंडल हाई। हाउ टू फाइंड मास्टर कैंडल? केवल सर सिंपल है, फर्स्ट कैंडल के अंदर 3 कैंडल्स अगर आ रही है तो इसको हम लोग मास्टर कैंडल कहेंगे। वेरी सिंपल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको फर्स्ट कैंडल पे फोकस करना है। फर्स्ट कैंडल के अंदर नेक्स्ट 3 कैंडल्स आ रही है तो इसको हम लोग कहेंगे मास्टर कैंडल, और ये 3 कैंडल्स को हम लोग कहेंगे बेबी कैंडल्स, क्योंकि ये काफी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। नाउ दिस इज अक्टूबर मंथ एग्जांपल, गाइस। यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट मास्टर कैंडल ऑन विच डेट कैन यू सी। Yes, Mohan sir, this logic
is applicable, bank nifty, nifty, stocks. I have shown you everything. 15 minutes time frame, 1-5. 14th आप देखिए, डेट 14th एंड 18th 19th, कौन से डेट पे आपको दिख रहा है सेटअप? 14th 18th 19th अक्टूबर। ध्यान से देखिए आपको कौन से डेट पे मास्टर कैंडल सेटअप दिख रहा है। ओके राहुल सर, वी विल एक्सप्लेन हाउ वी कैन ट्रेड ऑन 19th 18th को भी देखते हैं हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट के लिए आपको रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी ऑन 14th, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन 14। देखिए 14th को क्या हुआ है, कैन यू सी वी हैव अ गैप अप ओपनिंग, एक गैप अप ओपनिंग हुई है। सो ऑलवेज रिमेंबर, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मास्टर कैंडल सेटअप बन रहा है, वेरी हाई चांसेस ट्रेड आपके फेवर में जा सकता है। बिकॉज आफ्टर गैप अप ओपनिंग देखिए प्राइस सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, एक गैप अप ओपनिंग के बाद वो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव अपने को गैप अप में ही मिल गया। सो बिफोर प्राइस गिव एनी फर्दर मूव, इट इज टेकिंग सम रेस्ट। तो इसके लिए आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है गैप अप ओपनिंग के टाइम पे। इन दिस कैंडल वी गॉट ब्रेकआउट, 2 to 3 कैंडल्स में ही टारगेट आ गया, बिकॉज जो रेंज था मास्टर कैंडल का, इट वाज वेरी स्मॉल, दिस वाज नॉट अ बिग रेंज। So you got target within 2 to 3 candles very quickly. So 14th we had a setup, even we had a setup on 18th. Okay, can you see this is also a master candle. So again 18th को भी देखिए gap up opening हुआ। On 18th also we have a gap up opening, master candle, and look at the breakout. We got breakout here, but trade did not work, price came down, hit your stop loss. So some trades can be like this, अगर 10 बार आपको ट्रेड मिल रहा है, so all 10 times this setup may not work. So as I told you in the beginning, accuracy is more than 60%. So some trading sessions can be like this, you will get a perfect setup, perfect breakout, but still trade did not work. So that's why stop loss is very important, money management is very important, trade management is very important, because once you enter in the trade, एक बार आप ट्रेड में एंटर हो गए, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, नो वन नोस। सो एक ही चीज है हमारे कंट्रोल में, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, वो ही हमारे कंट्रोल में। सो एज अ ट्रेडर ऑलवेज डू रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ओके, बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, ट्रेड कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। नेक्स्ट डे पे आप देखिए, नेक्स्ट डे वी डू नॉट हैव मास्टर कैंडल। देखिए फर्स्ट कैंडल के अंदर सिर्फ 2 कैंडल्स आ रही। So in first candle, you can see we have only 2 baby candles. We want minimum 3 baby candles inside first candle to call first candle as the master candle. So we do not have any setup on 19th. This webinar is not for swing trading strategy. Sorry. So ये webinar में हम लोग intraday trading strategy पे focus कर रहे हैं. Again, October month example, 20th October, 21st October. So on which date, guys, can you see this setup? 20th 21, कौन से डेट पे आपको सेटअप दिख रहा है? Perfect. So we have a setup on 20th, okay, not on 21st. So ये दिन की पहली कैंडल है, this is the first candle. You can see 3 baby candles are within first candle. So this is master candle, consolidation, breakdown. Okay, in this candle you will take entry, and from here you can see we got one side move on downside. So on 21st we do not have any master candle setup. This is the first candle, I cannot see any 3 candles inside first candle. So on 21st we do not have setup. On 20th this is the perfect master candle setup. So tell me guys how this session is going on. Are you getting something new to learn in this session? स्ट्राइक प्राइस, अनिल सर आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो एटीएम ऑप्शंस एट द मनी। Great. So now guys, please mention how many years of experience you have in stock market. आप कितने टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? Okay, please mention in chat box. I want to see since how long you guys are trading.
in stock market? Okay, so 3 years, 3 months, 1 year. Okay. Okay, I can see few of you are beginners who have recently started. Some of you have experience, more than 2 to 3 years also I can see. So tell me guys, are you profitable till now? On net basis, are you in profit? So what you guys can think on this? Is profitable trading a myth? Can anyone become a profitable trader? कोई भी एक पर्सन क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है अकॉर्डिंग टू यू? Share your thoughts on this. According to you, can one become a profitable trader? Yes, so you guys all agree. Okay, one can become a profitable trader. So how one can become a profitable trader? So let's discuss a brief about it. What are the things you require to become a profitable trader? क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एक profitable trader बनना है? See, very first thing you can see here strategy. आपको एक strategy पता होनी चाहिए जो कि वर्क हो. Now in stock market, see, there is no 100% guarantee. In stock market, we deal with probability. In trading, we deal with probability. What are the chances trade can work in our favor? There is no holy grail. तो आप कोई भी strategy सीख रहे हो, make sure the strategy should have good accuracy rate, more than 60%, 65% accuracy होनी चाहिए एक strategy. Now strategy का हो या इसको आप setup भी कह सकते हो. You can call this as a strategy or setup. So what strategy or setup means? Strategy या setup आपको तीन चीजें बताता है: एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट. जैसे हमने मास्टर कैंडल सेटअप अभी डिस्कस किया. सो मास्टर कैंडल सेटअप मुझे तीनों चीजें बता रहा है. एंट्री कहां करनी है, वेयर टू एंटर, व्हाट शुड बी माय स्टॉप लॉस एंड व्हाट विल बी माय टारगेट. ये चारों चीजें मुझे मास्टर कैंडल सेटअप से पता चल रही है. नाउ एज अ ट्रेडर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे काम नहीं करना है. As a trader, you may learn 5 to 6 strategies, या आप 10 strategies भी सीख लो. But at a time, you don't have to trade more than 2 to 3 strategies. आप 2 या 3 strategies के ऊपर काम मत करो एक साथ. Now what many traders do here, ठीक है, वो traders क्या कहते हैं? Let's say एक अच्छी strategy उनको मिली जिसका accuracy rate है let's say 60%. उन्होंने नाउ 60% accuracy basically means अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 4 ट्रेड्स में आपको नुकसान भी हो सकता है. आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, if strategy is having 60% accuracy, in 6 trades you can make profit, in 4 trades you can make loss. So let's say a trader started working on that strategy. Now unfortunately what happened, in first 4 trades he made a loss. ठीक है, first 4 trades में उनको लॉस हो गया. Now the thinking will be profit तो हो ही नहीं रहा है, 2 3 4 बार लॉस चुका है. They will switch to another strategy. So do not change strategy very soon. आपको जल्दी strategy switch नहीं करनी है. अगर आपने एक strategy सीखी है, at least I will say उसको 3 महीना 3 months उसके ऊपर आप काम करो. At the end of 3 months you cannot see the result, then you can switch the strategy. So do not judge any strategy too soon. As I told you in the beginning, I'm a fund manager. So at Sri Sai AMC, I trade only on 2 strategies for my clients. That's it. Since March, I'm trading only on 2 strategies. And till date, we have generated 15% return on capital. So you need to stick on 2 to 3 strategies, not more than that. Okay, next is money management, risk management. Now money management or risk management, that basically means deciding position sizing. आप position sizing calculate करने के बाद ही trade कीजिए. Position sizing will tell you how many number of shares you can buy.
So first of all, as a trader, I will advise do not use leverage. आपको पहले leverage use नहीं करनी है. Trade with your own funds. ठीक है, आपके जो खुद के पैसे हैं उसके ऊपर ही आप ट्रेड कीजिए, लेवरेज का आप यूज मत कीजिए. सो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. ओके, पोजीशन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and third one, as you guys said, discipline is very very important. So if you are not following discipline in your personal life or in professional life, then believe me, trading में भी आप discipline follow नहीं कर पाओगे. So discipline is very very important. So अगर आपने कोई strategy पे काम करना start किया है, so proper entry पे ही आप trade लीजिए. Stop loss hit हो गया, do not wait and hope कि वापस it will go to my break even and then I will exit. Once it hits stop loss, move out of the trade, cut your losses and move out of the trade. So this discipline is very very important. Once your target is achieved, again book the profit. Do not wait कि और ऊपर जाएगा. So discipline is very very important. आपको टाइम पे stop loss profit book करना है, and because of FOMO you don't have to enter. Wait for a proper breakout. When you think that breakout is very strong, convincing, then only enter in the trade. And last one is you need to be a mentally fit. Okay, mental fitness is very very important as a trader, because we need to take right decision. In technical analysis, some days will be like loss making days. जैसे मैंने आपको beginning में भी कहा, in technical analysis we deal with probability. Not all trades will be in profit. Okay, in some trades you have to face loss. So हो सकता है वो दिन पे you will feel disappointed, demotivated. So अगर आपको लॉस हो रहा है, स्टॉप दी ट्रेडिंग, आप ब्रेक ले लीजिए. अभी यहां पर लॉस होने के बाद कुछ ट्रेडर्स क्या कहते हैं, दे स्टार्ट डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग. 2000, 3000, 4000 का लॉस हुआ, दे स्टार्ट रिवेंज ट्रेडिंग कि मुझे ये लॉस कैसे भी करके रिकवर करना है. सो प्लीज डू नॉट डू ऑल दिस. एक्सेप्ट योर लॉसेस. जिस दिन लॉस हुआ, टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन ऑन नेक्स्ट डे. So how you can increase your mental fitness here? So the answer is meditation. At least आप 20 minutes तक आप meditation कीजिए on daily basis, because we need mental fitness when we are sitting for a trading in front of screen. If you are not mentally fit, you won't be able to take correct decisions at the time of doing trades, at the time of taking trades. So these are the points you need to keep in mind if you want to become a profitable trader. Now guys, with this note, let's start a journey towards profitable trading. So what we are doing, we have an upcoming program called 10 days training program. In these 10 days, what we will do from day 1 to day 4, first 4 days में हम लोग intraday trading पे focus करेंगे. How we can do intraday trading in stocks. Day 5 to day 8, okay, my focus will be on index. You guys will learn how you can do intraday trading in Nifty and in Bank Nifty. तो पहले 4 दिन हम stocks पे focus करेंगे. Next 4 days we will focus on index, and last के 2 दिन we will focus on options writing strategies. ठीक है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि at Sri Sai AMC I only trade on 2 strategies for my clients. So those 2 strategies I will reveal on day 9 and day 10. Option writing strategies. So this is the upcoming program for next 10 days. You can see the content. So first 4 days I will only focus on stocks. ठीक है, stocks में आप कैसे trade कर सकते हो. So on day 1 and day 2, you can see I will discuss how we can trade gap up opening and gap down opening. So जैसे मैंने कहा in second half, ठीक है, ये वेबिनार को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखिए सेकंड हाफ में आप आज ये स्ट्रेटजी सीखोगे. आई विल कवर दिस स्ट्रेटजी टुडे ओनली, हाउ वी कैन ट्रेड गैप डाउन ओपनिंग. सो इन सम टाइम आई विल स्टार्ट दिस सेटअप. नाउ व्हाट इज गैप अप ओपनिंग? व्हेनेवर यू फाइंड दैट प्राइस हैज ओपनड अबव प्रीवियस डे हाई, तो उसको हम लोग गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं. सो लेट्स से यस्टरडे हाई वाज 100 and today we got opening at 102. So this is called as gap up opening. As a trader, it is very important to recognize whether this gap up will sustain or not. Many times you might have seen एक अच्छे gap up के बाद price sustain नहीं करता है and eventually price comes down. So how to recognize after gap up whether price will sustain or not? So this point you will also learn.
How we can do short trading on the day of gap down opening, this I will cover in some time today only. Day 3, you will learn how to do trend analysis, pivot point analysis on 15 minutes time frame, and based on this how we can trade rejection candle. ये day 3 पे cover होगा. And on day 4 I will cover improvised version of master candle setup. ये मास्टर कैंडल सेटअप को हमने फर्दर इंप्रूव किया है बाय प्लेसिंग सम एडिशनल फिल्टर्स लाइक ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई. I have reworked on my stop loss part to further improve risk reward ratio. I will also show you how you can trade master candle on 5 minutes time frame. आप 5 minutes के टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्रेड कर सकते हो, बट इन सर्टन कंडीशंस. तो ये सब चीजें हम लोग वर्क इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करने वाले. तो फर्स्ट 4 days I will focus only on stocks. ये स्ट्रेटजीज हम लोग सीखेंगे. You don't have to worry about stock selection. देखिए हर एक सेटअप के लिए हमारे पास स्कैनर्स हैं. So we have a scanner for gap up opening, we have a scanner for gap down opening. Even I have created scanner for master candle. So at the starting you guys were asking how to select stock. So we have a scanner. आपको stock selection नहीं करना है. Just run the scanner. Scanner आपको list of stocks दे देगा जिसमें master candle setup बना है, जिसमें गैप अप ओपनिंग बना है, जिसमें गैप डाउन ओपनिंग हुआ है. सो वी हैव क्रिएटेड स्कैनर्स. नाउ नेक्स्ट 4 days आई विल फोकस ऑन इंडेक्स. ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही मैं फोकस करूंगा. सो ऑन डे 5 यू विल लर्न हाउ वी कैन ट्रेड बैंक निफ्टी. आप बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हो इन इंट्राडे, दैट आई विल डिस्कस ऑन डे 5. डे 6 वी विल डिस्कस ऑप्शन बाइंग सेटअप, ओके, फॉर निफ्टी and bank nifty. This we will discuss on day 6. Day 7 I will discuss option writing setup. Okay, this is expiry special setup. ये setup को हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं every Thursday on every weekly expiry. Day 8 again I will focus on option buying setup. And last 2 days of program we will focus only on option writing part. Because options are depreciating assets. Okay, you need to understand this fact. With passage of time, call option premium, put option premium decreases. Okay, this is called as theta decay. So as a trader, आपको theta decay का advantage उठाना है. So you need to learn option writing. So what I will cover on day 9, you can see on day 9 I will cover bank nifty short straddle. ये straddle हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं every Monday, Wednesday, Thursday. And on day 10 I will discuss in-depth option chain analysis. अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कौन से साइड में जा रहा है, whether we have a bullish bias or bearish bias in intraday, and accordingly you can decide which strategy you want to trade. तो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे वी कैन गो फॉर बुल पुट स्प्रेड और वी कैन गो फॉर बेयर कॉल स्प्रेड. सो ये दो स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम फ्रॉम डे 1 टू डे 10. फर्स्ट 4 days स्टॉक्स के ऊपर फोकस होगा, नेक्स्ट 4 days इंडेक्स के ऊपर फोकस होगा, एंड लास्ट के 2 दिन में ऑप्शन राइटिंग के ऊपर फोकस होगा. Now, if any one of you interested in attending this session, okay, fees is 5,000, but today we are offering this program for just 2,000 for 10 days program. इसमें आपको recordings, PPTs मिल जाएंगी, scanners भी आपको मिल जाएंगे with lifetime access. So this is the best offer you will get today. तो ये offer valid है जब तक हम class continue कर रहे हैं, तब तक ये offer valid है. If anyone is interested, you guys can quickly take screenshot and you can do the enrollment. After enrolling, you can ping on this number. We will confirm your payment at the same time, and you will immediately get recording access. आपको recording access तुरंत मिल जाएंगे, all recordings, PPTs, scanners. And from tomorrow, okay, from tomorrow we will start live sessions. ठीक है, कल से live sessions start हो जाएंगे अगले 10 दिन के लिए. Timing will be 9 PM. Okay, Hamel is interested. Thank you, sir. टाइमिंग जो रहेगा आपको 9 बजे का रहेगा. डेली 1 आवर का सेशन होगा. एक टाइम पे हम लोग एक ही सेटअप पे फोकस करेंगे. सो ईच डे वी विल टारगेट 1 सेटअप, दैट्स इट. यू विल ऑल्सो गेट लाइव मार्केट सपोर्ट. ठीक है, आपको लाइव मार्केट भी सपोर्ट दिया जाएगा. तो जो भी हमने सेटअप्स डिस्कस किए बेस्ड ऑन दैट
हाउ वी कैन ट्रेड इन लाइव मार्केट। ठीक है, ये भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको लाइव मार्केट सपोर्ट दिया जाएगा। एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे वी विल कंडक्ट लाइव मार्केट सेशन। आपको लाइव मार्केट में आके मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू डू ऑप्शन चेन एनालिसिस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे। ओके, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स देयर विल बी लाइव मार्केट सपोर्ट। 9 p.m. Jitendra, 9 p.m. evening, late evening batch we have. Even if you are busy in daytime, you can attend, late evening batch. Okay, screener, I will show you how you can use. तो एक सेटअप और हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, गैप डाउन ओपनिंग में आज आपको यहीं पर ही बता देता हूं। सो दिस इज वन ऑफ गुड सेटअप। आप ये सेटअप से स्टार्ट कर सकते हो अपना काम इंट्राडे में, जिस भी स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। सो इट इज वेरी सिंपल सेटअप टू ट्रेड। So once again, guys, those who are interested, you can do the enrollment. This offer is valid till the time this class is live. So let's move ahead and discuss about gap down opening. Now, what is gap down opening? ठीक है, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, gap down opening को। If opening price is below PDL, then it is known as gap down opening. So PDL here means previous day low. Now let's assume yesterday low was 100. And today we got opening at 96. आज प्राइस 100 के नीचे ओपन हुई है। So this is called as gap down opening. Now as a trader, this is very important for us to recognize. क्या ये gap down sustain होने वाला है कि प्राइस वापस रिकवर कर जाएगा? This is one of the very important point to learn as a trader. So this is very simple. How we will recognize this? For this, what we will do? We will use 5 minutes time frame. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको फर्स्ट कैंडल पे फोकस करना है। आई वॉन्ट फर्स्ट कैंडल शुड हैव ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन ऑन द डे ऑफ गैप डाउन ओपनिंग। गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड फोकस ऑन फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल मस्ट हैव ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन। इफ यू आर गेटिंग ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन इन फर्स्ट कैंडल, वेरी हाई चांसेस गैप डाउन विल सस्टेन, because open equal to high formation indicates sellers are strong, bears are strong. That's why even after opening gap down, price is not crossing opening price on upside and you are having open equal to high. Very high chances this gap down will sustain. Again, the accuracy of this setup is more than 60%. Okay, every time this setup may not work. Out of 10 times, I'm sure this will work for you at least 6 to 7 times. 2 to 3 times में आपको लॉस हो सकता है। Now, what are the conditions to take a short trade? दो simple conditions आपको follow करने। So condition number 1, you can see price should open below previous day low, मतलब gap down open होना चाहिए। Second condition है open equal to high का formation होना चाहिए। अगर ये दो conditions meet हो रही है, you are ready to take a short trade. Now how to take a short trade? उसके लिए आपको कुछ rules follow करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 simple rules हैं। Rule number 1, when you will enter on short trade, कब आप enter करोगे short trade में? अगर first candle का low break हो रहा है in 5 minutes time frame, so at that time we will enter in the trade. If price break first candle low in 5 minutes time frame, okay, we will enter in the short trade. आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सिंपल, फर्स्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख देंगे हम लोग। एंड टारगेट, व्हाट विल बी द टारगेट? टारगेट विल बी फर्स्ट कैंडल रेंज। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट कैंडल की रेंज है, दैट शुड बी योर टारगेट। नाउ ऑल 3 पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन आई विल शो यू एट द एंड ऑफ सेशन वेरी रिसेंट एग्जांपल्स। गैप डाउन ओपनिंग का हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मीनवाइल वी विल लर्न द सेटअप। This is Bata India. We got this setup on 19th April. See, this is 19th April. This was previous trading session. Look at the low. In previous trading session, Bata India made a low of 1313. Now see what happened next day. We got gap down opening. You can see here where price opened at 1312. What was previous day low? 1313. So this is only 1 point gap down, not a major gap down, but still this is a gap down. Because opening price is below previous day low price.
ओके, दिस इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, यू कैन चेक द टाइम फ्रेम एट टॉप। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड फोकस ऑन फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल पे आप फोकस कीजिए। कैन यू सी फर्स्ट कैंडल इज बियरिश, एक बियरिश कैंडल है विदाउट अपर विक। देखिए कैंडल को अपर शेडो नहीं है, सो इफ फर्स्ट कैंडल इज बियरिश without upper wick, this means we have an open equal to high formation. Okay, this first candle represent open equal to high formation. So this is the alert candle for me. Trade कब लेना है आपको? When we have to take a trade, when price break first candle low. जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है आप एंटर कीजिए शॉर्ट ट्रेड में। आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल हाई। First candle high will be your stop loss. Very simple. Go short below first candle low. Keep stop loss first candle high. Now what will be the target? Range of first candle will be your target. ठीक है, ये जो फर्स्ट कैंडल की रेंज है वो आपका टारगेट रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट रेंज, ये तो हमने मास्टर कैंडल में भी सीखा। कैंडल हाई माइनस कैंडल लो। So when you do this calculation, you will get a range of first candle. So here you can check, we are going for a short trade below 1295 because first candle का low जो है वो है 1295. Take a short trade below 1295. First candle high stop loss 1312 is your stop loss. तो हम कितने पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं? We are taking short trade below 1295 with a stop loss 1312. 17 पॉइंट्स, लगभग 17 पॉइंट्स का रिस्क है ये। So target भी कितना होगा? 17 points will be my target. So 1295, okay, minus 17, 1277 is your target. Okay, in this candle we got the target. Now in coming slide I will also show you how you can trade stop loss. देखिए ट्रेड लेने के टाइम पे आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट कैंडल का हाई। So while entering in the trade, first candle high is your perfect stop loss. Once trade is moving in your direction, you can trail stop loss. Okay, from first candle high, you can set this candle high as your stop loss because I can see this is the lower high. You can read the price action जैसे हमने master candle में सीखा। Initially price is coming down, moving up, तो यहाँ पर एक lower top बन गया। From here you can see again price is going down. So when trade is moving in your favor, you can trail stop loss from first candle high, change your stop loss to this candle high. So as an intraday trader, you need to manage your trade. एक बार ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। You should learn, how to trail stop loss. Some things you will also learn by experience. जब आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, फॉलो करेंगे किसी भी स्टॉक के प्राइस को, so some things automatically you will learn with the help of experience. So this is one way you can trail stop loss. आपको अगर lower top मिल गया, you can shift your stop loss from your original stop loss. Now, how many shares we should short? This is also one very important. So as I discussed this point, how to become a profitable trader. So position sizing is very important. Okay, it's all about risk management. देखिए अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है बट आप रिस्क फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, believe me you won't be successful trader. So risk management is very important. तो उसके लिए आपको पोजीशन साइजिंग बहुत काम आएगा। 3 स्टेप्स है। पोजीशन साइजिंग आपको क्या बताता है? आप कितने शेयर्स बाय कीजिए या कितने शेयर्स आप सेल कीजिए। So position sizing will tell you how many number of shares you should trade. So initially when you are learning any new setup, please do not trade in futures and options. First practice that setup in cash segment. You know what is the best part of trading in cash segment? We can decide how many shares we want to buy, how many shares we want to sell. We can decide. Futures and options में you need to deal with lot size. कोई भी नया setup आप सीख रहे हो, practice in cash segment for at least 3 months. Once you are confident, then you can start trading in futures and options. Take a small risk. Practice setup in cash segment and slowly and gradually scale up. So 3 steps हैं to decide how many shares you should buy. So step number 1, आपको trade risk decide करना। Now what is trade risk? Very simple.
एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ट्रेड रिस्क। देखिए अगर ये ट्रेड आपके फेवर में काम नहीं कर रहा, if Bata India trade is not working in your favor, then how many points loss you will face? That is called as a trade risk. So in Bata India, we are taking entry at 1295. My stop loss is 1312, initial stop loss. So how many points loss I am taking, or how many points risk I am taking? I am taking 17 points risk. Okay, here you can check. 1295 entry, 1312 stop loss. If this trade hit my stop loss, I will lose 17 points. So this trade is having a risk of 17 points. So this is called as a trade risk. Step 2, you can see here, you need to decide account risk. Now here I will like to share, thumb rule of portfolio management, which says that एक ट्रेड में कभी भी आप 2% से ज्यादा लॉस मत लीजिए, 2% of your trading capital. In one trade, you should not bet more than 2% of your trading capital. Now let's assume you have a trading capital of rupees 1 lakh. Now what will be the 2%? 2% will be rupees 2000. So in one trade, you should not take loss more than 2000 rupees. अगर ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 2000 से ज्यादा लॉस आपको नहीं होना चाहिए. So this is called as account risk. So I have assumed in this trade, let's say we are taking a risk of 1000 rupees. अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल काफी छोटा है, let's say you have a trading capital less than 1 lakh, you can decide manually how much loss you are willing to take. 500 rupees loss, 1000 rupees loss, एक अमाउंट आप डिसाइड कीजिए. अगर उतना लॉस हुआ भी मेंटली अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको. ओके, इट शुड नॉट अफेक्ट मेंटली. सो डिसाइड वन लॉस. इससे क्या होगा, आपको एडवांस में ही पता होगा कि अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, दिस मच अमाउंट आई विल लॉस. सो यू नो दिस इन एडवांस. सो इन दिस वे योर इमोशंस विल नॉट कम इन बिटवीन. You have a fully control on your emotions. If you are using leverage, you are not calculating position sizing, and if trade is not working in your favor, you will start feeling panic. So decide one amount, whatever amount you are ready to lose, उसके हिसाब से ही आप नंबर ऑफ शेयर्स लीजिए. तो इन दिस एग्जांपल मैंने अज्यूम किया है, लेट्स से आई वांट टू टेक 1000 रुपीज रिस्क. अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे 1000 से ज्यादा लॉस नहीं चाहिए. आई कैन bear 1000 rupees risk. So every trader has a different risk taking capacity. So you can decide your own risk taking capacity. If you have a trading capital 1 lakh or more than that, follow 2% account risk rule. And step 3 will give you position sizing. Very simple. Account risk को आप divide कीजिए trade risk के साथ. So 1000 divide by 70. आप 58 shares short कीजिए बाटा इंडिया की, not more than that. Okay, short only 58 shares. That's it. So even if this trade is not working, hitting your stop loss, so you will lose 17 points. आपको 17 points का नुकसान होगा. With 58 shares in hand, 58 into 17 आप करोगे तो आपका जो total loss होगा वो होगा 1000 rupees का. Okay, so this is very important. This is called as a risk management, या इसको आप कह सकते हो money management. आप swing trading कर रहे हो, intraday trading कर रहे हो, position sizing is must. पोजीशन साइजिंग के बिना आप ट्रेड में एंटर मत कीजिए. Now one more example you can see, Mahindra and Mahindra. You can see the big gap on graph. So what was previous day low? देखिए कल का लो क्या था, 785. And look at today's opening. आज कहां पर ओपन हुआ? You can see here 775 पे ओपन हुआ. 10 points gap down. And see open and high both are not ditto same. Open and high, you can see they are almost same, almost. So you can consider this as open equal to high only. A big fall you can see in first candle. So gap down opening, after gap down opening, you can see a big fall. Okay, this is 5 minutes time frame. And can you see what happened after that? Price is consolidating. Now you can connect the dots. This is like, we are trading master candle on 5 minutes time frame. देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मास्टर कैंडल दिख रही है. गैप डाउन ओपनिंग, अ बिग फॉल, उसके बाद देखिए बेबी कैंडल्स, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है. व्हेन इट ब्रेक फर्स्ट कैंडल लो, द मोमेंट प्राइस ब्रेक फर्स्ट कैंडल लो, आपको शॉर्ट ट्रेड में एंटर होना है. स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल हाई.
Okay, this will be your stop loss. जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, यू कैन ट्रेल स्टॉप लॉस. अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रेल स्टॉप लॉस फ्रॉम फर्स्ट कैंडल हाई टू दिस कैंडल हाई. देखिए ये एक लोअर टॉप है, फॉल, अगेन प्राइस वेंट अप, मेड अ लोअर टॉप हियर एंड अगेन इट फॉल. In this candle you can see we got the target. So this was a very good trade. Again here you can see Axis Bank, a gap you can see on graph. Look at the first candle without upper wick, this is open equal to high. Go short below first candle low, first candle high, stop loss. See this time we got target in 3 candles because range was very small. 10 point ka range tha first candle ka. So when range is very small you will get target very soon. In previous example you can see range was quite big. ये पहली कैंडल की रेंज लगभग 14 पॉइंट्स थी. यू कैन सी 775 ओपन हुआ था और हम लोग ट्रेड ले रहे थे 761, तो ये 14 पॉइंट्स की रेंज थी. सो इट टुक टाइम यू नो टू टेक द टू हिट द टारगेट. ओके, नाउ दिस इज स्टॉप लॉस हिट केस. दिस वाज द परफेक्ट ट्रेड इन इन्फोसिस, परफेक्ट सेटअप. ठीक है, यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ, शॉर्ट ट्रेड भी ट्रिगर हुआ, प्राइस केम डाउन, बट सडनली यू कैन सी इट took a U-turn and hit your stop loss. So that's why position sizing is must. You never know what will happen. Once we enter in the trade, it can hit your stop loss. So जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से ही आप शेयर्स लीजिए. Do not trade in futures and options directly. Now let me show you some recent examples on this setup. So guys, how was this setup? Was it easy? Can you trade on your own from tomorrow on this setup? Yes, no? Okay, so can you find any gap down opening trade in Dabur? देखिए ये आपके सामने जो ग्राफ है वो डाबर का ग्राफ है. कौन से डेट पे आपको गैप डाउन ओपनिंग दिख रहा है इन डाबर? On which date guys can you see gap down opening? Yes, MC setup can be extended on 5 minutes time frame, but only on the day of gap up, gap down opening. Mohan sir, we will square off once we get the target. Perfect, Hamil sir. So we got this setup on 20th in Dabur. Guys, you can pay attention on graph. Dabur में देखिए gap down open हुआ है. Look at here. This was the first candle. Very small gap down. देख जैसे ही फर्स्ट कैंडल बन जाए you can draw 2 horizontal line. Now see when this trade got triggered. देखिए यहाँ पर breakdown हुआ है डाबर में. In this candle we got the trade and look at the move after that. So once we got the breakdown, you can see entire day it was going down and it hit the target also. देखिए first candle का range calculate कीजिए. Can you tell me what is the range of first candle? Can you calculate range of first candle, guys? In Dabur, how many points range you can see? Perfect. 6 points is the range. So you can go short below 598 for a target of 592. Roughly 6 points, Rahul. Perfect. 5.7 exactly. So look at the low of this candle. Can you see what is the low of this candle? The low of this candle is 591. So after breakdown, you can see one side rally. Price was going. So this was a very recent trade on 20th October. We got this in Dabur. Now let's try to find out one trade in ICICI Bank. Again, this is one of the simple setup I'm sharing with you guys. Okay, this I have set up, I have borrowed from market profile subject.
Now, market profile is a very vast subject. So those, who are the pro traders who follow intraday trading, they follow market profile. And from market profile, I have picked gap up and gap down opening, and which work very well in intraday. And we have two setups for gap up opening. In 10 days training program, I will show you two setups, how you can trade gap up opening. Okay, one trade will be for taking long trade on the day of gap up opening, and one setup will be for taking short trade on the day of gap up opening. आप gap up opening वाले दिन पे भी short trade लेके काम कर सकते हो. So that is called as a failed gap up opening, because some trading sessions will be like this. Price gap up के साथ खुलेगा, but वो gap up sustain नहीं होगा. So as a trader you should know the trick, कब gap up sustain होने वाला है, कब gap up sustain नहीं होने वाला है. अगर gap up sustain नहीं होने वाला, we will go for a short trade. Very simple. So two setups I will discuss for gap up opening. Now we are trying to find out this trade in ICICI Bank. Okay, so guys, try to find out on which date can you see the trade in ICICI Bank. Perfect. On 13th. Perfect. So you can clearly see how beautifully trade we got on 13th, and it worked very well. So this is the first candle, you can see. Again, you can see, guys, first candle is master candle, 5 minutes time frame. Can you see? Okay, this is the first candle. You can check the range. 716, 711, 5 points range. Go short below 711 for 5 points target. Okay, 706 will be your target. Look at the low of this candle. This candle made a low 705. It hit the target. Okay, volume part is not important. See, now if as a trader you are using volume, if you have a habit of using volume, you can use it. Otherwise, volume part is not required. Okay, so this setup we got in ICICI Bank. You can see it worked very well. So I have a scanner, as I told you. Let me show you scanner now. Okay, here, can you identify trade in Manappuram Finance in the month of August? Do we have any trade here? Please find out on which date can you see this trade in Manappuram Finance. Perfect. On 20th, you can see we got the trade in Manappuram Finance. Let me show you one more trade. Again, same stock Manappuram. On which date can you see? Very simple strategy, very simple setup, easy to learn, easy to implement in live market. So this is the first candle. Go short below first candle, keep first candle high stop loss, and look at the trade. Again, one more trade in Manappuram. In this counter, we got trade 3 times in the month of August 2021. So here you can see we got 9th. So this is master candle. Again, you can see on 5 minutes time frame. How long is the consolidation? See, and look at what a move after that. So 9th August, we got this trade. Again, 11th August, we got this trade. 20th August, we got this trade. 3 times we got trade. Same setup in same counter, Manappuram. Now, this is the scanner link, guys, for you. See, I am sharing this link with you in chat box. You can see. I will also share this PPT in WhatsApp group. Okay, the group which we have created for today's webinar. Okay, I will share this PPT and you will find this scanner link on slide number 50th, 50. I will share this PPT link with you in some time. Meanwhile, you can now check the chat box. I'm giving you this scanner link. Rahul sir, you can consider master candle setup only for stocks in 5 minutes time frame on the day of gap up or gap down opening.
I hope everyone got the link. So what you need to do, you need to click on link which I have given to you. तो अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ स्कैनर को आप कैसे यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस स्कैनर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. अगर किसी भी स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग मिल रहा है तो ये आप सेटअप को फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए. ठीक है, कम से कम 3 महीना आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है. उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना है ये सेटअप पे आप काम करोगे कि नहीं. सो क्लिक ऑन द लिंक which I have given to you. When you click on the link, see this web page will open. What you need to do, you just need to click on run scan. 9:20 को आप स्कैनर रन करोगे. ठीक है, मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट होगा 9:15 सवा 9 बजे. यू नीड टू वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स. पहले 5 मिनट आपको वेट करना है. यू विल run this scanner on daily basis. Make a habit on daily basis. You will run scanner 9:20. Okay, click on run scanner, scroll down and here you will get the list of stocks. अगर किसी भी स्टॉक में सेटअप नहीं बना है तो you will get this message. Okay, no stocks filtered in the scan. Now you should not expect हर दिन अपने को ट्रेड मिलेगा. नहीं, जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ उस दिन आपको ट्रेड्स काफी मिलेंगे based on this setup. Yes, so we have a WhatsApp group, or else what you can do, you can message me. I will share this screener link. So guys, this was all about today's session. इसमें हमने आज 2 setups discuss किए. We have discussed 2 setups today. So first setup was master candle setup. You can try that in index or in stocks. Second setup we have discussed gap down opening. Now this setup is only for stocks. Okay, do not try this setup in index. Okay, gap down opening setup will work only in stocks. Okay, so guys, this is once again 10 days training program. If you have not enrolled till now, you can enroll now. So first 4 days we will discuss simple yet effective setups you can do intraday trading in stocks. Next 4 days my focus will be on index, and believe me, all setups are very simple, easy to learn, easy to implement, no rocket science. Entry, stop loss, target, position sizing, ये 4 चीजों पे अपने को ध्यान देना. That's it. Day 9, day 10, if you are an option writer, you will learn all about option writing. Okay, this is the content. You can take screenshot. तो उसमें से day 2 तो मैंने already आपको आज ही बता दिया, how you can trade gap down. ये जो day 1 setup है, we have a 2 setups. Okay, as I told you, we will discuss 2 setups for gap up opening. One for taking long trade, other will be for taking short trade if gap up is failed. Day 3, this is one of the best setup, more than 70% accuracy. Rejection candle setup. You can even trade options. Okay, I will share how you can trade options on rejection candle setup. And day 4, I will discuss improvised version of master candle setup on 15 minutes time frame. And these are the next 4 days for index. Today is not the first day. Today is the free webinar I'm giving you. We are starting this program from tomorrow. Okay, tomorrow will be the day 1. We will discuss gap up opening tomorrow. Timing will be 9 PM, guys. So if anyone is enrolling today, you can see the fees is just 2,000 rupees. Very reasonable fees we are charging so that every traders can take advantage of this session. Okay, this training program will last for next 10 days, 10. All intraday trading setups we are going to discuss along with position sizing. So those who are interested, you guys can do the enrollment. After doing enrollment, you can ping on this number. I will confirm your payment at the same time. You will get recording access immediately. Okay, I will give you the recording access. You can start watching videos if you wish. From tomorrow, we will meet live for next 10 days, 9 PM late evening batch PF. Duration will be maximum 1 hour. Daily 1 setup we will discuss. After 10 days program, 2 months live market support will be there for you. Any doubts, any queries, guys, related to this, please ask in chat box. I will answer.
Thank you, Mohan sir. So guys who are interested, those who are interested, you guys can do the enrollment now. Fees is just 2,000 rupees. We will start sessions from tomorrow 9 p.m. Yes, Rahul sir, you can join the batch in December. You can book your spot. This is the one-time offer we are giving today. So once you enroll, you will get the recording access immediately. You can attend the batch in December, not a problem. Any doubts, any queries, guys, you can ask in chat box. Those who are interested, do the enrollment. After doing enrollment, kindly ping on this number. Thank you, Niranjan sir. Price action, Rahul sir. Everything will be based on price action. Okay, Hemal sir, you can send on this number. Okay, this is available on WhatsApp. You can send on this number.